ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਧਰ पहले मेंबर पूरे नहीं आए पर फिर भी हाँ जी ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ हैं जी बहुत ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਹੈਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 80th ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨੇ ਕੈਸੈਂਡਰਾ ਫਰਨੈਂਡੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਲਡ ਐਂਡ distinguished guests and our friends. They all have come up. More than 120 members are present over here. So we'll be celebrating India's happy Independence Day. Now it's 25th of August, but today we are celebrating this day. Thank you. Okay ji, thank you ji. Thank you Romi ji. Okay. Hello. जल्दी ना लो मेरी भी पट्टी किसी चीज का भी हम तो पीछे बैठने वाले भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हिंद हिमाचल यमुना गंगा उछल जलती तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे सब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे सा
ਸਿੰਘ ਲਾਏ ਨਾਰੇ ਪੁਲਿਸ
ਪੁਲਸੀਏ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਣ ਸਾਰੇ, ਪੁਲਸੀਏ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਜੋ ਕੰਪਣ ਸਾਰੇ, ਪੁਲਸੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਲਾਈਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਇਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਸੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਸੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੋ ਪਾਇਆ, 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ, 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੜੀਆਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਲਾਈਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸੀ ਲਾਈਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। Lovely to see. Oh, thank you. Oh, this is beautiful. Sat Shri Akal, Uncle. Hi, Auntie. So, you know, Sima told me today we better wear orange. Yeah. Hello. Please. Oh, video. We'll keep moving. So we're walking. Yeah. Ah. You walk the bana लो.
God, we're so beautiful. Now, have you already done the national anthem? No, we'll do again. You haven't done it, or you will? We have done, but we'll do Oh, again. no, it's okay if you've done it. We have done. Oh, then that's okay. That's all right. Oh, wow, Wowee, this is beautiful. This is gorgeous. Look at this. Oh, wow. Hello. Hi. Hello. Hi. How are you? Fine. Oh, I like the tablecloth, Uncle G. It's very, very lovely. Thank you so much. Please sit. Please sit. Thank you. Hi. बैठ जाओ Long time no see. Yeah, long time. Good to see you. Oh. My daughter's just always talking about you. Oh, what a blessing. So happy. Yes, welcome to dear Cassandra for coming here. See, we are. Please be seated. Please be seated. She is wearing one of our flag's color. We are honored. We feel blessed that at least she is wearing one of our orange color. Before I hand over to Cassandra, I would like to say a few words in our praise. The traditional custodians of the land of which we are meeting today, Bunurong, people of the Kulin nation, we pay our respect to the elders past and present and acknowledge their continuing connection to country. We also extend that respect to all Aboriginals, Torres Strait Islander people who are with us. Thanks. Yeah. Well, respected Chief Guest, Honorable Cassandra Fernando, MP Holt, distinguished guests, respected members, ladies and gentlemen, a very warm, heartfelt welcome to everyone on this special occasion as we come together to celebrate the 80th Independence Day of our beloved India. On behalf of Compassionate Hands, on behalf of Compassionate Hands Incorporated, it is my great pleasure, honor and privilege to extend a very warm welcome to our respected Chief Guest, Honorable Cassandra Fernando, MP for Well, Cassandra, we are truly honored by your presence here today. Your continued support, encouragement and connection with our multicultural senior community mean a great deal to all of us. Well, Indian tricolor reminds us of courage, sacrifice, peace and truth. The Ashoka Chakra reminds us to keep moving forward with the righteousness, unity and progress. Living here in Australia, we are very fortunate to enjoy values of freedom, democracy, multiculturalism and equality. Our group, Compassionate Hands Incorporated, is committed to bring people together, promoting friendship, strengthening our multicultural community. Once again, Cassandra, a very warm welcome to you, thanking you for taking the time to celebrate this important day with us. Friends, let us celebrate our Independence Day with pride in our heritage, gratitude for our freedom, and hope for a peaceful, prosperous future. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Vande Mataram! Vande Mataram! Vande Mataram! Vande Mataram! Thank you, everyone. Thank you. Namaste, Sashir Kal, Auntie G's and Uncle G's. I will start off by acknowledging the traditional owners of the land on which we live,
pay my respects to the elders past, present and emerging. It is so wonderful for me to be here today in Lynbrook in my lecture of Holt to celebrate the 80th Independence Day of India. Now, a massive thank you to Uncle Jagdeep Ji and the entire Compassionate Hands team for inviting me today to bring this event together. Can we put a round of applause? तो ਕਸੈਂਡਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੈਂਡਸ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਅੱਜ Thank you, Sima. Independence Day is a great day of pride and celebration, but it's also a day to remember. We remember the brave men and women who fought for India's freedom and their courage and sacrifice that they gave to the future generations so they can live a life of freedom, dignity and hope. तो कसेंड्रा कह रही है जो इंडिपेंडेंस डे है ये सिर्फ सेलिब्रेशन का दिन नहीं है इस दिन अपने हम वीर जवानों फ्रीडम फाइटर्स ਨੂੰ याद करते हैं जिन्हों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी इन्ने सैक्रीफाइस किए और अज सानू मौका दे रहे हैं कि आप फ्रीली अपनी फैमिलीज नाल रह रहे हैं और बाहर भी आ पा रहे हैं And as we all know, India has the largest democracy with a nation so rich with history, with a strong sense of culture and a bright future ahead. India's story is also Australia's story. It's also Australia's story. Almost 1 million people across Australia have Indian ancestry. तो कसेंड्रा कह रहे हैं जो इंडियन स्टोरी है वो ऑस्ट्रेलिया की भी स्टोरी है ऑस्ट्रेलियंस इन्ना कुछ करते हैं इंडियंस इन्ना कुछ करते हैं ऑस्ट्रेलिया च और ऑलमोस्ट 1 मिलियन इंडियंस हैं ऑस्ट्रेलिया में 1 मिलियन इंडियंस है And we are very fortunate that our great state of Victoria is home to the largest Indian-born community in the country. तो विक्टोरिया ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਟੇਟ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ में Here. We also we can't just measure the amount of numbers that we have. We also have to measure the contribution that Indian Australians make to our country. तो कसेंड्रा कह रही है कि ਇਹ नंबर सिर्फ ये नहीं है कि मैं नंबर दस रही हाँ कि नंबर ਦੇ ਕਾਰਨ मैं बोल रही हाँ बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्रीब्यूशन ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ Indian Australians, they run businesses, they create jobs, they care for our patients, they are doctors, they are nurses, they are aged care workers, and also they are our childcare workers. They build our homes and volunteer in our community. तो कसेंड्रा कह रही है जो इंडियंस है वो ऐसे बिजनेसेस रन कर रहे हैं ट्रेडीज हैं टीचर्स हैं स्कूल्स हैं हॉस्पिटल्स ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਗੇ ਉਥੇ ਇੰਡੀਅਨਸ काम कर रहे हैं ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ हैं Australian Indians don't just live in the community. All of you build our community for the better. Okay. तो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन सिर्फ यहाँ रह नहीं रहे वो ऑस्ट्रेलिया को बिल्ड कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं आगे कम्युनिटी में हेल्प कर रहे हैं ये नहीं सिर्फ इतने आकर बस गए हैं बट वो एक्टिवली ऑस्ट्रेलिया के प्रोग्रेस के लिए आगे काम कर रहे हैं And as the federal member for Holt, I am so proud to represent such a large and growing Indian community right here in Holt. But I'll tell you a little secret, everyone. That's not in my speech. I have the largest Punjabi community in Australia. तो कसेंड्रा कह रही है पंजाबी सबसे बड़ी कम्युनिटी और दूसरी चीज पंजाबी सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है और So how lucky are we? The friendship between by governments, but it's built with friendship, families, and people-to-people connection.
तो वो कहना चाह रही है जेडी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की फ्रेंडशिप है वो सिर्फ सरकारों के बीच में नहीं है, वो आप लोगों की वजह से है, जो आप लोग यहाँ पे आके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं कि भारत की सरकार भी ऑस्ट्रेलिया के साथ काम कर पाए। So before I conclude, I want to say I had the honour of meeting the PM of India, the Honourable Narendra Modi, and this was my second time meeting him. तो कैसेंड्रा कह रही है अभी जब नरेंद्र मोदी जी आए थे उनको मिलने का मौका मिला, वो भी दूसरी बार, पहले सिडनी में मिले थे, गिने चुने लोग गए थे, उसमें से कैसेंड्रा एक थी, अब दूसरी बार वो जब मेलबर्न में आए तब दोबारा कैसेंड्रा को मिलने का मौका मिला। And also, this is amazing for the PM of India, he remembered me. So I feel so honoured because when we were in the line, I was the third person in the line, and he said to me, Namaste ji. I said, oh, because I said to him when I was in Sydney, I said Namaste ji to him, and he grabbed both my hands, but this time he said Namaste ji to me. So I feel very honoured that he remembered me. तो कैसेंड्रा कह रही है जब लास्ट टाइम सिडनी में वो उन्हें मिले थे तो उन्होंने मोदी जी को बोला था नमस्ते, और इस बार जब वो मेलबर्न आए तो उन्होंने जब कैसेंड्रा को देखा उन्होंने दोबारा नमस्ते जी बोला, तो उनको याद था कि कैसेंड्रा कौन है। But and Uncle Jagdeep had the privilege of being in a very special lunch with the Prime Minister of Australia and the Prime Minister of India. There was only about 60 or 70 people in that room at the MCG. And Uncle Jagdeep, I invited Uncle Jagdeep to that lunch because I see the hard work, the dedication that you do for Compassionate Hands and for our broader senior community. Not just Punjabi, but Sri Lankans, other nationalities that are here. So I want to say thank you very much. So he got to have a private lunch with the Prime Minister of India. Two Prime Ministers. Two Prime Ministers, not just one, but two. तो कैसेंड्रा कह रही है कि जब मोदी जी इधर आए थे तो एक प्राइवेट लंच था बहुत एक्सक्लूसिव, जो सिर्फ 60 लोग ऑल अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया से इनवाइटेड थे, उसमें से एक बंदा जगदीप जी थे, क्योंकि जो आपका ग्रुप है कंपैशनेट हैंड्स, वो इतने साल से आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको पूरा सपोर्ट करना चाहती हैं, तो वो मेक श्योर करना चाहती थी कि जगदीप जी उस इवेंट में इनवाइटेड हो ताकि वो आपके ग्रुप को वहाँ रिप्रेजेंट कर सके। Telling this at each event that I go to, I wouldn't have won the seat of Holt without my very trusted people from Compassionate Hands. Thank you so much for your hard work, your dedication, the uncles that are around this room that have helped me. I want to say, and the aunties who have helped me, I want to say from the bottom of my heart, thank you very much. I can't do this job without your help. तो कैसेंड्रा कह रहे हैं जी जब पिछले साल इलेक्शन होया था वो इलेक्ट दोबारा हुए बिकॉज आप सबने उन्होंने सपोर्ट किया, पोलिंग बूथ पे काफ़ी मेंबर्स गए, कैसेंड्रा को सपोर्ट किया और आगे भी वो काम कर पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों का उनके साथ सपोर्ट है और ऐसे ही सपोर्ट आगे मेंटेन करते रहे। May the friendship of our two countries between Australia and India grow stronger and stronger. Happy 80th Independence Day, India! Thank you. Well said, Cassandra. Bonding between Cassandra and with our Compassionate Hands is not today, not 1 year. It's almost 4 years we have been seeing each other, meeting each other, and whenever I ask her for any function, she honors us. Good. And Cassandra, you just told that there are 1 million Punjabi Indians in Melbourne. But I have a relevant question. But there is no representation from Indians. There is, we have. So we've got in the Senate my very good friend, Senator Varun Ghosh, that came to... He's a Bengali.
and he came to the Holt Harmony Gala a couple of years ago. So he was the first one to do his oath. So we all do our oath. I did it on the Bible. He did it on the Bhagavad Gita, and it was the first time that's ever done it in the Senate. Senate, this Victorian Senate or It's Canberra? It's the Canberra Senate. Canberra Senate. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਮਿਸਟਰ ਘੋਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਸੌਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਤੇ ਓਥ ਲਈ ਸੀ. So still they are expecting more over there. Yeah. Well, it's about it's about volunteering. It's about, so we give Sima for example. Okay, he is one of the first Punjabis that has a Punjabi background to work in my office, and he got involved by volunteering for me. And he's been there since my first campaign. He has done politics, but he's also done other things in his degree that, you know, he can do other things, but instead he wants to work in politics. Yeah, that we very well know about Sima. He is a dedicated worker, he dedicated volunteer, and he gives maximum of his to yourself and to us even. Yeah, we are give it up for Sima, everyone. ਸਿਮਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੀਬਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਨ who helps us every time, everywhere. So ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ. And one thing very good I would like to share. Day before yesterday, he was one of my. मेरा देश दिलदारा, ऋषियां मुनियां अवतारा, मेरी कौम तो कर्जा नहीं लेना, गुरु गोविंद सिंह जय सरदारा, मेरा देश मेरे दिलदारा, ऋषियां मुनियां अवतारा, मेरा देश मेरे दिलदारा. Thank you. No doubt this देश है मेरे दिलदारा. Now, I'll ask Swamiji to say something. Yes. He's our religious guru. He is a yoga. राष्ट्र प्रेमियों को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने अपना समय निकालकर ये अमूल्य समय दिया. स्पेशली कैसेंद्रा को भी, जिन्होंने हमारी इस नेशन ये सेलिब्रेशन डे पर आए. भारत के इतिहास में अगर देखते हैं कि राष्ट्र कैसे बनता है, तो भाषा, जातीयता और इसका जो मूल उद्देश्य है उसको अगर देखें तो ऐसा लगता है कि केवल भाषा, धर्म, नस्ल के आधार पर राष्ट्र नहीं बनता. अगर केवल भाषा का ही आधार पर राष्ट्र बनता तो यूनाइटेड क्या बोलते हैं, ब्रिटेन अभी 2 राष्ट्र में पड़ता है, एक अमेरिका, एक ब्रिटेन बना. अगर हम लोग धर्म के आधार पर भी अगर राष्ट्र घोषित करते तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो केवल एक ही धर्म को मानते हैं, जैसे यूरोप है, वो भी एक नहीं रह सकता. एक्चुअली राष्ट्र निर्माण होता है प्यार तो हर पल कहना चाहिए, मेरा हूँ या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए.
देखो जी क्या सोहना बनाया इन्होंने प्रशादे साढ़े वास्ते। आ देखो इंडिपेंडेंस डे के प्रशादे ने जी वधिया सेवा कर रहे हैं गुरविंदर जी तो ये सब लाइन च लगे हुए ने। आओ जी आओ लाइन च आओ सारे शाबाश। सबनों मिलेगा सबनों बहुत दर्शन।